अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉर्शि प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉर्शि प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हुकूमत साज़ी जे हवाले सां। क़ौमी असेंबली जो इजलास जेको आहे 29 फ़रवरी ते घुरायो वेंदो। जेकॾहिं हुकूमत साज़ी जे हवाले सां सूबनि जी ॻाल्हि कजे त पंजाब में मरियम नवाज़ पारां उहिदो संभालण खां पोइ तेज़ी सां कमु शुरू कयो वियो आहे। सिंध में मुराद अली शाह टियों भेरो सिंध जी वॾी वज़ारत संभाली आहे, जॾहिं त बलोचिस्तान असेंबली में पिण मेंबरनि अॼु जेको आहे सो कसम खणी वरितो आहे। जिथे हुकूमत साज़ी जोड़ तोड़ उहिदनि जी वंड विरासत थिए थी, उते MQM पाकिस्तान जो जेको किरदारु आहे उहो नून लीग सां जेका उन्हनि जी इक्वेशन हुई उहा हिकिड़ो सवालिया निशान बणिजी चुकी आहे। MQM पाकिस्तान जी राब्ता कमेटी जे इजलास में जंहिं तरह जो ऑडियो लीक्स थियूं आहिनि कामरान टिसोरी ऐं मुस्तफ़ा कमाल जूं, जंहिंजो मुस्तफ़ा कमाल पारां एतराफ़ पिणु कयो वियो आहे, उन ते पिणु केतिरा ई सवाल उथी रहिया आहिनि, जंहिंमें MQM पारां इहो एतराफ़ कयो वियो आहे, इहो एडमिट कयो वियो आहे त हुननि जा जेके हुकूमत साज़ी जे हवाले सां जेके मामला आहिनि नून लीग सां 1.5 लाख जो शिकार आहिनि। पीपुल्स पार्टी ऐं नून लीग जी जेका इक्वेशन आहे उन खां पोइ MQM पाकिस्तान जो मर्कज़ में जेको रोल आहे उहो हिन वक़्तु सवालिया निशान बणियल आहे। इन हवाले सां पीपुल्स पार्टी जिते MQM जे मैंडेट ते सवालिया निशान उथारे रही आहे, त उन ऑडियो लीक्स में MQM पाकिस्तान पारां पिणु मैंडेट जे हवाले सां सवाल उथारिया विया आहिनि। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे MQM सां तालुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान राशिद खिलजी साहब ज्वाइन किया है। खिलजी साहब, जरा वजाहत कीजिएगा ये क्या मामलात हैं, ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं और मैंडेट की बातें हैं, MQM और नून लीग के जो मामलात हैं वो भी 1.5 लाख का शिकार हो चुके हैं। जी देखें समीन, एक तो बात ये है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कल जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं उन्होंने कल इस बात की वजाहत की थी कि वो ब्रीफ दे रहे थे कि मुस्लिम लीग का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है। अच्छा, उस चीज को जिसने भी लीक किया भले से इखलाकी तौर पे तो बहुत गलत काम है, लेकिन उसमें वो जो पूरी बात अगर आप सुनेंगे तो ये चीज वजाहत आ रही है कि ये मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी जो खुद बैड गवर्नेंस के हवाले से अपना एक रिकॉर्ड रखती है, और हम तो ये बात कहते हैं कि अगर सिंध में जिस अंदाज से इलेक्शन कैंपेन हमने शहर कराची, हैदराबाद, मिर्कात में चलाया, वैसी कैंपेन तो किसी ने नहीं चलाई। लेकिन बदकिस्मती से हमें सिंध के दीगर इलाकों में इतनी पजीराई नहीं मिली जितनी कराची, हैदराबाद में मिली। अलबत्ता एक हैदराबाद में हमारी एक सीट भी हमसे छीनी गई, लेकिन हम ये समझते हैं कि MQM का मैंडेट हकीकी है, और पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून अगर वो सियासी मसाइमत की बात कर रहे हैं तो ताली दोनों हाथों से बजती है। आप अपने मैंडेट को हकीकत पर मबनी कहें और किसी दूसरे के मैंडेट के ऊपर सवालिया निशान उठाएं, ये मुनासिब तरीका नहीं होता। अगर किसी को MQM के मैंडेट से तकलीफ है तो इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, कोर्ट भी मौजूद है, जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करें। आपने पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी के लिए मैं कहूँगा कि पिछले 15 वर्ष में आप सिंध पर हुक्मरान रहे, आपने सिंध के अर्बन एरियाज के लिए क्या क्या सबके सामने जाली डोमिसाइल बना के अपने लोगों को नौकरियां दे दी। आज आपको ये भी हजम नहीं हो रहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के आम नौजवान असेंबली में आके बैठे, कि जो आपकी क्लास है, जो आपका मेंटल ब्लॉक है, वो इस चीज को पसंद नहीं करता। आप लोगों को ऐसे वोटर चाहिए कि जो आपके सामने खड़े रहें, आपके यहाँ सामने हाथ बन के खड़े रहें। ये कोई जमहूरियत नहीं है। पीपल्स पार्टी जिस अंदाज की जमहूरियत चाहती है वो डेमोक्रेटिक वे नहीं है, वो एक आमराना तर्ज हुकूमत है जिस तहत पीपल्स पार्टी चलती है। बात भले थे वो बुलंद बांग करें, लेकिन पिछले 10 साल में खुद ऐवान का हिस्सा रहा। वहाँ पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध के अर्बन एरियाज को जिस तरह नजरअंदाज किया जाता था, अर्बन एरियाज के मैंडेट की जिस तरह तौहीन की जाती थी, नॉन इलेक्टेबल्स की बातों को ज्यादा अहमियत दी जाती थी, वो हमारे सामने है। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो अपने मामला देखें, वरना अगला इलेक्शन जब होगा तो सबके सामने आ जाएगा। लोगों में शऊर आ रहा है। राशिद साहब, खुद मुस्तफा कमाल साहब ने ऑडियो के असल होने का भी एतराफ किया है। उसके बाद टिसोरी साहब की जो ऑडियो लीक हुई है तो MQM तो खुद मानती है। अब पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात हैं वो सिंध में, जैसे मुराद अली शाह साहब ने भी कह दिया, आप लोगों को भी तहफुजात हैं। वफाक में MQM की क्या पोजीशन होगी, क्या स्टेक होगा वफाक में MQM का? क्योंकि नून लीग के साथ भी MQM और पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ होने के बाद MQM की पोजीशन कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, मैं पहले तो उसकी थोड़ी सी मजीद वजाहत करूँ। मुस्तफा कमाल भाई ने बिल्कुल एंडोर्स किया उस बात को, और हमने कहा ऐसी बात हुई थी, वो ब्रीफ था। यानी कि पीपल्स पार्टी ने जो बात मुस्लिम लीग नून से कही और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने जो बात MQM की
مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھی, وہ بات شیئر کی مصطفیٰ کمال بھائی نے, اور لازمیت ہے وہ کوئی ڈھکنے چھپنے والی بات نہیں ہے. انہوں نے بتا دیا کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے ان کا مینڈیٹ فیک ہے. تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے معاملات چلتے ہیں. آج آخری سیشن ہے, اس کا صورتحال واضح ہو جائے گی. دیکھیے ہمارا مقصد پچھلے پی ڈی ایم اے کے اندر بھی مین فیصلہ کن ووٹ 7 ووٹ ایم کیو ایم کے تھے, اور اگر وہ ایم کیو ایم کے ووٹ اپوزیشن جماعتوں کو نہیں ملتے تو تحریک قدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. ہم نے اس وقت پاکستان کے لیے, پاکستان میں جو بگڑتی ہوئی صورتحال تھی اور جو پی ٹی آئی کا عاملانہ رویہ تھا, نان ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ تھا, اس کی بنا پہ ہم نے پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا تھا. اس کے بدلے میں اگر انہوں نے وفاقی حکومت کا حصہ بنایا تھا, اس میں ہمیں شیئر دیا تھا, تو سندھ حکومت میں پھر بھی ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرز حکمرانی ہمیں سوٹ نہیں کرتی. مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں 1 سے 2 دن میں وہ تمام تر صورتحال واضح ہو جائے گی. راشد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ایم کیو ایم کے اگر نون لیگ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, بہتر نہیں ہوتے, کیونکہ ایم کیو ایم کی جو شرائط ہیں, جو معاملات ہیں, جو معاہدہ اس پہ پہلے بھی عمل نہیں ہو سکا تھا, گارنٹر تھے شہباز شریف صاحب, تو ایم کیو ایم کو تحفظات تھے, تو پھر ایم کیو ایم کے اپوزیشن میں بیٹھ سکتی ہے؟ دیکھیں حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, یہ سب ایک لازمیت سیاست کے اندر پارلیمان کا ایک طریقہ کار ہے. اور جہاں تک بات ہے حکومت کی, تو ہمیں کوئی اتنی زیادہ خواہش نہیں ہے حکمراں بینچوں پہ بیٹھنے کے. ایم کیو ایم ایک طویل عرصے سے اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ کے اپنے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کر رہی ہے, اور اگر ہم حکومتی بینچوں پہ بھی بیٹھتے ہیں تو پبلک ایشوز کو بالکل ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ بات تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے رابطہ کمیٹی اس چیز کو طے کرتی ہے, اور اس کے حوالے سے کارکنان کے اجلاس, ذمہ داران کے اجلاسوں کا فیصلہ جاری ہے. ان کو سب چیزوں پہ اعتبار میں لے لیا گیا ہے. رابطہ کمیٹی مکمل بااختیار ہے, وہ جو مناسب سمجھے گی فیصلہ کرے گی, لیکن ہمارا فیصلہ سندھ کے مینڈیٹ کی جو ہے بحالی کے لیے ہے. سندھ کے اربن ایریاز کے ساتھ جو پچھلے 10-15 برس میں ڈسکریمنیشن کی گئی ہے اس کے حوالے سے, اور ہمیں توقع ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے شہری علاقوں کو اپنے ساتھ رکھے گی, اور تو بھی ہم جو اپنے شہر کے مسائل ہیں ان کا مقدمہ لڑیں گے, حکومتی بینچوں پہ بیٹھ کے لڑیں گے. لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے, انہیں ہمارے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا بنا, تو جب بھی ہم اپنا شہر کا مقدمہ لڑیں گے, تو ایم کیو ایم نے کبھی اس چیز کو اپنا معیار نہیں بنایا کہ وہ حکومت میں بیٹھے گی تو سیاست کرے گی. خلجی صاحب یہ بتائیے گا کہ سندھ میں گورنرشپ کے کیا معاملات ہیں؟ ڈسوری صاحب نے کہا کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا. پیپلز پارٹی سندھ میں اپنا گورنر لانا چاہ رہی ہے. دیکھیں سمین, آپ دیکھیں کہ ماضی میں جو ایک جماعت کا ایک گروہ تھا جسے زبردستی مسلط کیا گیا تھا, اور جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو ہم یونیورسٹی میں بدل دیں گے, ان کی دیواریں توڑ دیں گے. انہوں نے تو نہیں کیا, لیکن کامران ٹیسری بھائی نے جو گورنر ہاؤس ہے اس کے اندر آئی ٹی کے وہ کورسز کرا رہے جن کے پر بچوں کے $3,000 سے $5,000 خرچ ہوتے, اور اس کے بعد وہ کورسز ہوتے ہیں آئی ٹی کے. وہ کورسز انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر اپنے اور اپنے جو دوست ہیں مخیر حضرات ان سے مل کر ایک پورا سسٹم بنایا, اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں بچے اس ٹائم وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کامران ٹیسری بھائی جس انداز سے کام کر رہے ہیں, جس طرح ہیلتھ سیکٹر میں گورننس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی. پیپلز پارٹی بھی تعلیم دینا چاہتی ہے اپنے پسند کے لوگوں کو, جاب دینا چاہتی ہے اپنے پسند کے لوگوں کو, اور جو گورننس کے ایشو وہ سب کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کامران ٹیسری بھائی کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے ایم کیو ایم کے ویژن کے مطابق سیاست برائے خدمت, اسے پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا. اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہاں جو طوائف الملوکی سندھ حکومت کے محکموں میں پھیلی ہوئی وہی طوائف الملوکی کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. ابھی گورنر کی حیثیت سے ایک آئینی طور پہ جو ایک ذمہ داری ہے وہ ادا کرتے ہیں, وہ بات پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی. تو صدر بسم اللہ, پیپلز پارٹی کو کوئی شوق ہے تو وہ اپنا شوق پورا کرے. ایم کیو ایم محتاج نہیں ہے. ایم کیو ایم پچھلے 10 سال
बल्कि 15 वर्ष से मुख्तलिफ मसाइब का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, सियासी तौर पर बहुत सारे मसाइल हमें रहे, लेकिन ना लोगों की हमने खिदमत छोड़ी, ना अपने शहरों का मुकदमा लड़ना छोड़ा। राशिद साहब, आखिरी सवाल आपसे, राब्ता कमेटी के इजलास की जो ऑडियो लीक हुई है, इस हवाले से जाहिर MQM से ताल्लुक रखने वाले ही अरकान वहां पर मौजूद थे, पार्टी प्रोटोकॉल के हवाले से क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि ये जो लीक हुई है, ऑडियो लीक हुई है, तो ये MQM के अंदर से ये मामला हुआ है। MQM का एक तंजीमी तरीक़ाकार है, MQM अपने डिसिप्लिन के हिसाब से मशहूर है, और जिसने भी ये गैर तंजीमी अमल किया है, गैर इखलाकी अमल किया है, इखलाकी तौर पे, तंजीमी तौर पे गैर मुनासिब तरीक़ाकार है। अगर किसी ने ये अमल किया है तो मैं ये समझता हूँ कि तंजीम का एक तरीक़ाकार है, उसके अंदर वो चीज़ ट्रेस आउट हो जाएगी, और फिर तंजीम अपने तरीक़ाकार के मुताबिक वो तंजीमी सज़ा और जज़ा का अमल है वो जारी और सादी रखती है। बहुत शुक्रिया राशिद खिलजी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, MQM सां ताल्लुक़ रखंदड़ राशिद खिलजी साहब सां गॾु हो, जेको MQM जूं जेके ऑडियो लीक्स थियूं आहिनि राब्ता कमेटी जे इजलास में, उन हवाले सां उनजी जेका वज़ाहत हुई उहा तव्हां ॿुधी। उनजो चवणु हो त इहा इख़लाक़ी हवाले सां जंहिं बि इहा भञकड़ी कई आहे, तंज़ीमी हवाले सां उनजो हिकिड़ो अलॻि प्रोटोकॉल आहे, उनजी ज़रूर जांच कई वेंदी। गवर्नरशिप जे हवाले सां उनजो चवणु हो त गवर्नर कामरान टिसोरी जेको कमु कयो आहे, माज़ी में कंहिं गवर्नर इन तरह जो कमु गवर्नर हाउस में वेही करे नाहे कयो। उनजो चवणु हो त पीपल्स पार्टी सां उन्हनि जी जेका इक्वेशन आहे उहा उन्हनि जो पीपल्स पार्टी जेको तिर्ज़ हुक्मरानी आहे उन्हनि खे सूट नथी करे। पीपल्स पार्टी सां उन्हनि जी कंहिं बि हवाले सां कोऑर्डिनेशन या इक्वेशन नथी थी सघे। MQM जो इहो चवणु हो त नून लीग सां उन्हनि जा जेके मामला आहिनि उहे अॼु फाइनली तय थी वेंदा, उन खां पोइ हू वधीक आईंदा जे लाइ अमल जे हवाले सां कुझु ॿुधाए सघंदा। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं GDA जे हवाले सां। चूंडुनि खां पोइ GDA पारां भरपूर एहतजाज जो सिलसिलो जारी आहे। GDA जो मौक़िफ़ आहे त हू थियल चूंडुनि खे नथा मञनि, उन्हनि जे मैंडेट खे चोरायो वियो आहे। री इलेक्शन जो जेको चूंडुनि जो मुतालबो आहे, GDA पारां चयो वियो आहे त ॿीहर चूंडूं करायूं वञनि। इन हवाले सां GDA जो एहतजाज जो सिलसिलो जामशोरे खां पोइ सिंधी राजधानी कराची जे असेंबली में ओध खयो पियो वञे। सॼी कराची असांखे जाम नज़र आई। GDA पारां भरपूर एहतजाज कयो वियो, उन खां पोइ मोरो में एहतजाज कयो वियो, ऐं कल्ह जेको GDA जो एहतजाज हो समूरी सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में। इन हवाले सां GDA जो मौक़िफ़ आहे त हू चूंड नतीजनि खे नथा मञनि, उन्हनि जे मैंडेट खे चोरी कयो वियो आहे। इन हवाले सां जेका बि हुकूमत हाणे ठहंदी उहा कमज़ोर हुकूमत हूंदी। GDA जो चवणु आहे त उन्हनि सां मुस्लिम लीग नून जे हवाले सां उन्हनि जी जेका इक्वेशन हुई, मुस्लिम लीग नून उन्हनि खे कंहिं बि हवाले सां को रेस्पॉन्स नाहे ॾिनो। नून लीग जेका वफ़ाक़ में हुकूमत ठाहिण वञी रही आहे, GDA जी जेका सीट एडजस्टमेंट हुई उहा चूंडुनि ताईं महदूद हुई। इन समूरी सूरत हाल GDA जी हिकमत अमली जे हवाले सां जेको मामलो आहे, हिन ते ॻाल्हाइण लाइ असांखे इंतहाई सीनियर सियासी अॻवान सफ़दर अब्बासी साहब ज्वाइन कयो आहे। अब्बासी साहब भलीकार, तव्हां प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। अब्बासी साहब, सिंध में हुकूमत ठही चुकी आहे, वॾी वज़ारत मुराद अली शाह संभाले चुको आहे। पंजाब में, अॼु बलोचिस्तान में जिथे चूंड नतीजनि ते एतिराज़ आहिनि त उते असांखे सूबाई हुकूमतूं ठहंदे बि नज़र अचनि थियूं। GDA जो एहतजाज जो सिलसिलो बि जारी आहे, छा चवंदव? बुनियादी ॻाल्हि जेको आहे यानी GDA पहिरें ॾींहं खां वठी जेको आहे ही सॼी इलेक्शन प्रोसेस खे रिजेक्ट कयो। असां सम्झूं था पिया त जेके बि इलेक्शन थी उनमें नेशनल ऐं इंटरनेशनल लेवल ते उनजे बारे में जेके बि कमेंट्स आया आहिनि, चाहे उहे पाकिस्तान में इंटरनल जेके ऑब्जर्वर्स ग्रुप आहिनि, फाफन हुजे, पिलडाट हुजे, HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुजे, या इंटरनेशनल लेवल ते जेके बि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जूं मिशन आहिनि या जेके ऑब्जर्वर्स ग्रुप्स आहिनि, उहे तक़रीबन जिते किथे जो हिन इलेक्शन जे मथां हिकिड़ो सीरियस क्वेश्चन मार्क्स सवालिया निशान थिया आहिनि। ऐं GDA बि इहो सम्झे थी पई त जेको सिंध में चाहे असांजी वधीक प्रेज़ेंस सिंध में हुई, जिते जेको कुझु इलेक्शन थी आहे उहा हिकिड़ी रिग्ड ऐं बोगस इलेक्शन हुई, जेको RO जे ज़रिए, DRO जे ज़रिए पंहिंजो इलेक्शन कमीशन जी कनाइमनि सां ऐं जेको आहे सो केयरटेकर गवर्नमेंट जी कनाइमनि सां सभु कुझु जेको आहे सो हिकु अठी हलाए जेको आहे सो तक़रीबन सॼी ऑपोज़िशन खे बुलडोज़ कयो वियो आहे। त असां इहो फील कयूं पिया पहिरें ॾींहं खां वठी त ही हिकिड़ी एंटी स्टेट
बोगस ऐं रिग्ड इलेक्शन आहे ऐं हिन जी ख़िलाफ़ असां एहतजाज कंदासीं। त अॼु तव्हां ॾिसो ॾिठो त असां 12 तारीख़ पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेके बि प्रोग्राम असां अनाउंस कयासीं, ख़ासि तौर ते जेको असांजो जामचोर जो प्रोग्राम हुयो जंहिंमें पी साहिब जन पाण जेको मौजूदु हुया, उहे वॾी लखनि जी तादाद में माण्हुनि में जमा थिया। हुन खां पोइ मोरे में प्रोग्राम थियो। पोइ असां जेको आहे असेंबली जी कॉल ॾिनीसीं, कराची खे सॼे खे बंदि कयो वियो। हिकिड़ी असेंबली जी कॉल खे रोकण जे लाइ तव्हां पूरी अधु कराची बंदि कई, अधु सिंध बंदि कई, काकर फाटक वठी वेंदे टोल प्लाज़ा ताईं इशारा फैसल सभु कुझु बंदि करे ऐं तव्हां हिकिड़ी चोर दरवाज़े खां वञी MPs खे हलफ़ कराए वियो। हाणे इहो सॼो अमल जेको थियो हुन में हुन खां पोइ यकीन सां लाइ ॿियो कारो चारो कोन सवाइ असां एहतियात अनाउंस कयूं ऐं 27 तारीख़ जेको कल्ह एहतियात थियो आहे, सॼी सिंध में एहतियात थियो आहे। हुन में इन दौरान जेको आहे GDA न पर JUI, जमात इस्लामी ऐं PTI जेके बि तंज़ीमी पार्टीज़ हुयूं सभु हुन में शरीक थियूं आहिनि। ऐं असां जेको आहे हिकिड़ो 4 पार्टी अलायंस बि ठाहियो आहे। असां जेको आहे हुनजी कमिटीज़ बि ठाहियूं आहिनि जेके जेको आहे सो हाणे डिलिबरेट करे रहियूं आहिनि त असां मुश्तरका एहतिजाज कीअं पंहिंजो अॻिते वधायूं। लेकिन हुन में हाणे कुझु 10 ॾींहं खनि रमज़ान खां अॻु में हुननि जो असां प्रोग्राम ठाहींदासीं ऐं पोइ जेके जेको रमज़ान अचे थो रमज़ान जे हवाले सां बि जेके बि असांजा प्रोग्राम ठहंदा उहे पंहिंजी तरह हूंदा। असां कंहिं बि सूरत में जेको आहे सो हिन इलेक्शन फ्रॉड खे जेको तस्लीम करण लाइ तयारु न आहियूं। इंशा ताला जेका बि असांजी तहरीक आहे अॻिते वधंदी, असां जेका हुन तहरीक खे यकीनन जेके इशू उथंदा अचण वारे ॾींहंनि में महांगाई जे हवाले सां, बेरोज़गारी जे हवाले सां, जेके IMF जूं कंडीशनलिटीज़ इम्पोज़ थींदियूं अवाम जे मथां, जेके अवाम जा जेके मसइला थींदा असां हुन सां बि रिलेट कंदासीं ऐं असां पंहिंजे तहरीक खे इंशा ताला वधीक अॻिते खणी हलंदासीं। ऐं अचण वारे ॾींहं में तव्हांखे नज़र ईंदो त हिकिड़ी मुतहरिक क़िस्म जी ऑपोज़िशन आहे जेका हिन सॼे प्रोसेस खे नथी मञे ऐं हिकिड़ो जेको लेजिटिमेसी जेका हिन क़िस्म जी लेजिटिमेटी क्राइसिस जेको हिन गवर्नमेंट जे चाहे उहो फेडरल हुजे या प्रोविंशियल हुजे उनजे गिरद जेको घुमी रहियो आहे उहो अॻिते हली जेको आहे हिन सॼे निज़ाम खे ज़मीन पोस करे छॾियो। अब्बासी साहब, नून लीग GDA खे सां जेका गॾु हुई, ज़ाहिर आहे सिंध में जेको हिकिड़ी सपोर्ट हिकिड़ो गॾियल अलायंस हो, उनजी हिन वक़्तु इक्वेशन छा आहे ऐं जेके 4 पार्टियुनि जी जेका अलायंस आहे उन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं पार्टियूं शामिल आहिनि? सम्झो असां जेके जेको आहे PMLN जे असांजी सीट एडजस्टमेंट थी, इत्तेहाद कोन हुयो जंहिंमें असां उनजे कुझु जेके उम्मीदवार उनखे असां सपोर्ट कईसीं। बशीर मेमन साहब जन हुया या ॿियनि कुझु हल्कनि में जेके उनजा उम्मीदवार हुया उनखे असां सीट एडजस्टमेंट जे ज़रिए GDA ऐं JUI उनखे सपोर्ट कयो हो बाक़ाइदे। पर जेको इलेक्शन खां पोइ मां जो राब्तो बि थियो जेका बि हिते प्रोविंशियल लीडरशिप हुनजी उन सां मां उनखे पुछियुमि उन्हनि खां त पोइ हाणे छा जे तव्हां फेडरल गवर्नमेंट ठाहियो था पिया त असांजो इत्तेहाद कयो, पर उनजी तरफ़ां को ख़ातिर ख़ा जवाबु मूंखे न मिलियो। जेका जवाबु जॾहिं न मिलियो त पोइ यकीन असांखे पंहिंजी जेका बि पॉलिसी उहा ठाहिणी हुई उन पॉलिसी में असां इहो महसूसु कयो त जेका इहा बोगस इलेक्शन आहे असां हिनखे कते मंज़ूर न कंदासीं। हाणे PMLN ते यकीन गवर्नमेंट में वञी थी पई, उहे छा था सोचनि, उहे पाण सदा हिसाब सां वञी वेही रहिया आहिनि। जेके असांजो प्रिंसिपल ओपोनेंट जेको हुयो उन सां वञी हुते इत्तेहाद करे उहो गवर्नमेंट ठाहिनि। जेको बि मसलो आहे पंहिंजो हेलो आवाज़ अचे थो? जी 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 अब्बासी साहब, हाणे जेको बि मसलो आहे त हुन में असां ज़ाहिर आहे ॿियूं पार्टीज़ आहिनि जेके एहतियाज करे रहियूं आहिनि। जीअं JUI आहे उहा असांजी इलाही जेको सिंध जे हवाले सां ख़ासि तौर ते ऐं पंहिंजो असांजी जमात इस्लामी बि ऐं PTI बि हिन सॼे अमल में शामिल थिया आहिनि। हाणे असां इहे जेको आहे सो पंहिंजो जेको आहे सो इहे सभु जेको आहे सो हाणे असां एहतियाज में शरीक आहियूं। अचण वारे ॾींहंनि में यकीन सां पंहिंजो प्रोग्राम बि ठाहींदासीं ऐं हिन एहतियाज खे वुसअत बि ॾींदासीं। अब्बासी साहब, मुतालबो छा हूंदो? री इलेक्शन जो मुल्क छा मुतमिल थी सघे थो? जेके तहफ़ुज़ात GDA खे या जमात इस्लामी खे या PTI खे या ॿियनि पार्टियुनि खे आहिनि, उहे ई तहफ़ुज़ात नून लीग या पीपल्स पार्टी बि ज़ाहिर करे रहियूं आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि इहा ॻाल्हि कई त मैंडेट जे हवाले सां उन्हनि खे बि तहफ़ुज़ात आहिनि, पर जमहूरियत या आइन जी बालादस्ती जे लाइ ज़रूरी आहे त पार्टियुनि खे गॾिजी करे मुल्क जी बक़ा जे लाइ, मुआशी इस्तेहकाम जे लाइ कमु करण जी ज़रूरत आहे। इन करे सभिनी खे गॾिजी हलणो पवंदो।
इन सूरतहाल में जेका मुल्क जी हिन वक़्तु मुआशी हवाले सां पोज़ीशन आहे, तव्हां नथा सम्झो त तमामु ॾुखियो मरहलो हूंदो जेको मुतालबो आहे? मुतालबो छा री इलेक्शन जो आहे या इलेक्शन फ्रॉड आहे? तव्हां नथा असां छा थियणु जेके घुरिजे? ॾिसो उन में अञा पोज़ीशन्स फॉर्म अप थी रहियूं आहिनि। जी यकीनन जेके पीटीआई जा असांजा दोस्त आहिनि उहे फॉर्म 45 ते इंसिस्ट करे रहिया आहिनि त फॉर्म 45 जे मुताबिक़ रिज़ल्ट्स अनाउंस कयूं वञनि। असांजो जेका वधीक कुर्बत असांजी हुजे या छा जे करे असां सॼे इलेक्टोरल प्रोसेस खे रिजेक्ट करे रहिया आहियूं। असां सम्झनि था पिया सॼी इलेक्शन जेका बि थी आहे हिकिड़ी रिग्ड बोगस इलेक्शन हुई ऐं इन जेको आहे सो इन जा नतीजा बि ख़ासि सुठा न निकिरंदा, छाहे करे जेको आहे हिकिड़ी लेजिटिमेसी क्राइसिस आहे पंहिंजे ऐं ॿियो जेको आहे सो अचण वारे ॾींहंनि में लॻे नथो जेका हीअ शइ जेको आहे किथे बि हली सघंदी। ऐं मां सम्झां थो इहा असांजो जेको जीडी जी पोज़ीशन आहे हुन में असां चाहियूं था पिया त उहा सॼे मुल्क में रीइलेक्शन थिए। इन हवाले सां रीइलेक्शन थिए त हीउ जेको निज़ाम जेको ठही रहियो आहे एॾो अनस्टेबल निज़ाम आहे कि अॻिते हली किथे न किथे किरी पवंदो। इन खां असां बहितर सम्झूं था पिया त इहो अॻिते हली जो असांखे वधीक नुक़सानु थिए त हाणे जेको आहे नुक़सानु बर्दाश्त करे ऐं हिकिड़ी फ्रेश इलेक्शन जे ज़रिए फ्रेश मैंडेट जे ज़रिए हिकिड़ो हक़ीक़ी मैंडेट जेको आहे सो पंहिंजो मिले पंहिंजो पार्टियुनि खे उनजे मुताबिक़ उन मैंडेट जे मुताबिक़ उहे पार्टीज़ जेको आहे पंहिंजो पाकिस्तान जा जेके मुआशी आइनी कानूनी जेके बि मसइला आहिनि उहे हल करे सघनि। अब्बासी साहब, मोबिलाइज़ेशन जो जीडीए सां तव्हां नथा सम्झो त मसइलो आहे, चाहे उहा चूंड मुहिम हुजे या ॿिया मामला हुजनि, अवामी जेका मोबिलाइज़ेशन आहे उन में तमामु घणा फ्लॉज नज़र अचनि था। जीडीए में हिकिड़ो अलायंस आहे, हिन में जेको मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ आहिनि त यकीनन जेको हर पॉलिटिकल जमात में बि फ्लॉज हूंदा आहिनि, मां हुनखे इनकार नथो कयां, पर तव्हां असांजी हिकिड़ी कॉल ते ॾिसो त तक़रीबन सॼो सिंध इकठो थियो जेको जामशोरे में थियो, पीर साहब जेके लीड कयो सॼो जेको आहे सिंध जा जेके नुमाइंदा मां सम्झां थो त जेके बि उनसर आहिनि उहे जेको आहे सहाफ़ी हुजनि, इंटेलेक्चुअल्स हुजनि, सियासी वर्कर हुजनि, कारकुन हुजनि, हर पार्टी जा उन जेको आहे उनजे ख़िलाफ़ जेको आहे रिग्ड इलेक्शन जे ख़िलाफ़ उथी बीठा। ईअं मोरे में बि ईअं थियो। असां चाहियूं पिया त हिकिड़ो भरपूर एहतिजाज सिंध असेंबली साम्हूं थी आहे, पर उसखे क्रश कयो, बाक़ाइदा हिकिड़ी इंतिज़ामी अंदाज़ में हुनखे क्रश करण जी कोशिशि कई वई ऐं जेको आहे हुनजो नतीजो निकिरो त अधु सिंध जेको आहे कराची जो नर्व सेंटर जेको आहे पैरालाइज़ थी वियो, सॼो ॾींहुं जेको आहे उहो बंदि रहियो, सॼो अमल। उहो पाण जेको आहे हुनखे मां ईअं चवंदुसि घणियूं हुन में ॻाल्हियूं आहिनि, पर जेको आहे हुनखे पाण हुनखे कामयाबु कयो कि असांखे छॾींदा त असां पंहिंजो एहतिजाज रिकॉर्ड करे हले वञूं, पर हुन में ज़ाहिर आहे ततार जेको आहे एॾी वॾी हुजे जो शायदि हुनखे हैंडल न पिया करे सघनि या न पिया करणु चाहिनि। तो मां सम्झां थो त अचण वारे ॾींहंनि में यकीनन जेको आहे हर ऑर्गेनाइज़ेशन में हिकिड़ो फ्लॉज हूंदा आहिनि, पर असां सम्झूं था पिया त जीडीए जेका कंसिस्टेंटली बीठी आहे गॾु 2017 खां वठी अॻिते बि जेको आहे इंशा ताला जो इम्पैक्ट हूंदो ख़ासि तौर ते सिंध जे अंदरि उहो जीडीए हूंदो। असां यकीनन चाहींदासीं त जेके ॿियूं जमातूं आहिनि ॿियनि प्रोविंसिस में हिकिड़ो नेशनल लेवल ते बि जीअं एहतिजाज वधे थो पियो त इंशाअल्लाह असां हुन में बि पंहिंजो शिरकत और शमूलियत कंदासीं। वॾी महिरबानी अब्बासी साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सफ़दर अब्बासी साहब जो मौक़िफ़ तव्हां ॿुधो, हुनजो चवणु हो त नेशनल लेवल ताईं बि हुननि जी कंसेशन आहे त हू पंहिंजे एहतजाज खे वधाइनि। इन हवाले सां हुननि जो चवणु हो त हू भरपूर एहतजाज जो जेको दाइरो आहे उहो अञा वधाईंदा। हिन हवाले सां हुननि जो जेको हिकमत अमली आहे उहा तय थी रही आहे। हुननि जो चवणु हो त जंहिं तरीक़े सां जीडीए जो मैंडेट चोरायो वियो आहे, हू इन चूंडनि खे नथा मञनि, री इलेक्शन जो मुतालबो करे रहिया आहिनि। जेका बि हुकूमत जुड़े थी, उन्हनि जो चवणु हो त इन हवाले सां उहा यकीनन हिकिड़ी कमज़ोर हुकूमत हूंदी जंहिंजो पंहिंजो को मैंडेट कोन्हे को। अॼोके प्रोग्राम जो सिलसिलो पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।